Today I'll discuss about factors affecting temperature. So first 3 points, that's mean latitude, altitude and distance from the sea are completed. That's why today I'll discuss about only prevailing winds, oceanic currents and industrial emission, urbanization and the deforestation. So first point is the prevailing winds. Prevailing winds are the planetary winds and that are caused by the formation of the giant convection cells over the earth, and prevailing winds and blow from the hot region of the earth and like the tropics and to the cold areas of the earth like the temperate or the polar regions. Okay, so prevailing winds, look at this picture. क्या होते हैं? प्रिवेलिंग winds and blow from the hot region of the earth. कहाँ से बहते हैं? हॉट रीजन से, ओके, ऑफ द अर्थ एंड लाइक द ट्रॉपिक्स. कहाँ पर? टू द कोल्ड एरियाज ऑफ द अर्थ लाइक द टेम्परेट और द पोलर रीजन्स. सो लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज द ट्रॉपिकल region. This is the tropical region. From here warm winds move towards the pole. Okay, move towards the pole, and from the cold areas back to the hotter region, and from here again back towards warm region. Okay, winds from warm region increase the temperature of the cold place and they blows into, and winds from the cold region reduce the temperature of the hot places they blow into. What does it mean? इसका मतलब क्या है? देखो, ये जो वार्म पवन इधर जा रहा, इधर जाने के बाद इसका जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है. ओके, देन अगेन ये जब इधर से इधर आ रहा है, इसका टेम्परेचर कम है, इधर आने के बाद इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है अगेन. ओके, देन द सेकेंड पॉइंट इज द ओशनिक करेंट्स. Ocean currents are rivers of the hot or cold water that flows and within the ocean, and winds that blow over the hot ocean currents and get heated and carry the heat onto the land, and they blow over and raising the temperature of the coast area. And similarly, winds that blows onto the land after passing over the cold currents and lower the temperature of that coastal region. Okay, so क्या है? देखो, ये है ओशनिक currents. Okay, oceanic current, there are two type of current. एक है warm current and दूसरा है cold currents. Okay, so warm current that mean ये गर्म, बहती गर्मी है, and यह cool यानी ठंडे. ये जो current यानी warm current जब इधर आते हैं क्या होते हैं? they mix. Okay, and warm current move towards the cold currents and warm it. Okay, and again क्या होता है? देखो, winds that blows over the hot ocean current get heated and carry the heat onto the land that blows and over the raising the temperature over the coast area. And similarly, the winds that blow onto the land after passing over the cold currents lower the temperature of that coastal region. ये जो हॉट यानी वार्म जो करंट ये लैंड एरिया में आते हैं तब इसका ये लैंड एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाते. ओके, एंड ऑन द अदर हैंड जब ये कूल करंट इधर आते हैं यानी लैंड एरिया में, तब भी इस लैंड एरिया कूल हो जाते हैं. ओके, लाइक दिस. Then the third point, industrial emission, urbanization and deforestation. So first is the industrial emission. देखो, ये है industrial emission. Okay, look at this. इधर देखो क्या है? Okay, so the concrete and the tar roads and high-rise buildings
that makes up the urban centers absorb heat and radiate it back into the atmosphere. The heat gets trapped in the lower layers of the atmosphere and increase the atmospheric temperature. Automobiles and the industrial emission and the indiscriminate cutting down of the trees and have also been responsible for the increase in temperature in atmospheric temperature. Okay, so look at this. This is the industrial emission, and this is the urbanization, and this is the deforestation. Okay, so इसके वजह से क्या हो रहा है? ड्यू टू emission, that's mean industrial emission, and due to urbanization and deforestation के वजह से जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है. ओके, इसके वजह से, किसके वजह से? क्योंकि द कंक्रीट एंड द tar roads and high rise building that makes up the urban centers and absorb heat and radiate it back into the atmosphere. ओके, ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग हो रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो रहा है एंड इंडस्ट्रियल एमिशन हो रहा है. ओके, लाइक फॉर दिस रीज़न एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है. ओके, एंड ऑल्सो फॉर द कटिंग ऑफ ट्रीज, इसके वजह से भी टेम्परेचर बढ़ रहा है. ओके, अंडरस्टैंड? ओके, so thank you everyone.